Hello guys, like, share and subscribe, and also guys do not forget to comment down below. Hey guys, welcome back to my channel. So apologies for my late video, but there's a reason behind this. As many of you don't know that I am a UG student, a first year UG student, and I am studying in University of Nottingham, United Kingdom. And so as you might be knowing that now our country has been moved to amber list of UK, so now I can travel back to my university, and in September I would be starting my second year. So I'm very excited to find that I'm able to go back to my university. So I'm going on 18th, and so because of that only I was busy in my shopping, packing, so that's why I couldn't shoot a video. So that's why I thought, why not to make a video on how to get admission in universities. Wait. So let me tell you guys that my video is different from others, as there's a major thing that आप research कर लो, फिर उसके बाद आप courses देख लो जो भी आपको जाना है, and फिर obviously आप UCAS के through UK universities में admission ले सकते. These are the major bold things which other people tells you, but the main things, the छोटी जो बातें होती हैं, these are very like it's like climbing a ladder without climbing a first step of ladder. So जो छोटी चीज़ें होती हैं, that's also I'm gonna tell you guys, so stay in the video. Also before that I would also like to tell you guys that on 18th I would board my flight from Delhi. So I would be shooting a whole video of how you can travel to foreign countries while I'm going to UK. So I would be shooting for that. What are the paperwork? Oh my god, let me tell you guys that the UK government site is so messed up. It is like passenger locator form, the quarantine thing, आप वहाँ पे quarantine कर सकते हो, कितने सारे paperwork चाहिए, all that. So मतलब paperwork is very much. So वहाँ पे आपको क्या की ज़रूरत पड़ी, आप वहाँ पे जब पहुँचोगे तो आप इट्स अ वेरी हेक्टिक. ऑल्सो आप जब इमिग्रेशन में वहाँ पे जाओगे तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं. उसके बाद अपना लगेज बिकॉज दैट्स अ सो हेक्टिक थिंग. ओके, सो back to my topic. So I was talking about how you can take admission in the UK universities. Not only to UK, I would not be. Okay, so not only to UK, I would not be stick to the UK universities only. If you want to take admission out of India, like abroad, so my topic would be that. So first thing first, I would start that. So research and all this, like guys, बहुत बात की बात होती है. First things that you should get a good marks in class 12 if you are aiming top university. Okay guys, so first thing that top universities का मतलब होता है अगर आप इंडिया से पढ़ने जा रहे हो कहीं बाहर यूनिवर्सिटीज़ में, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ का मतलब हो गया 1 to 100. 1 से 100 के बीच में ही टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एंड ओनली उतनी ही वर्थ होती हैं वही टॉप इन द वर्ल्ड. एंड अगर आपको रैंकिंग चेक करनी है तो QS रैंकिंग गाइस चेक करना, और भी बहुत सारी होती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या, बट QS रैंकिंग इज़ द वैलिड थिंग, वैलिड रैंकिंग जिसमें जो वर्ल्ड रैंकिंग बताती है दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सो if you are aiming a top university, so 1 to 100 is the top universities. उतना ही वर्थ अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, बिकॉज अगर वो 100 के बाहर चले जाता है, लाइक 100 to 200, and is like okay, but below 200, then I would really suggest you guys don't go, because अगर आप if you are very rich, then obviously it's your personal choice. But if you are like a middle class family like me, so it's worth only to 1 to 100 if you are aiming a top university, क्योंकि वही वर्थ भी करती हैं. And there is one more thing that guys, अगर आप बाहर पढ़ने जाते हो, only the first thing is the top university, the second thing is the course, and the third thing is the budget. So I would like to tell you guys that top universities like जो 1 से 100 के बीच के रेंज की होती हैं, it would cost you 1 crore if you haven't got any scholarship in a Indian currency. So be ready for that.
Okay, so back to my topic. So first thing is to get a good marks in class 12. Okay, so like in India, obviously you know that marks matters what, but there but like out of India there are other things also. They'll give more value like over your marks. Like if you are connected to any NGO, or you are any socialist, or you are any kind of any activist, or like these things, like social things more, then अगर आपके marks कम भी होंगे ना, तो maybe they'll admit you in their universities. But these are the second things. And India में you all know guys that it's not easy, because यहाँ का education system and curriculum, you all know it's very different. तो practical thing तो बहुत ही कम होती है. हमारा जो education system is more focused towards a theoretical thing. So that's another thing case. So इसीलिए important है कि आप marks अच्छे लाओ if you want to be get admitted in a top university. And what I meant by top university is between the range of 1 to 100. द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपने मतलब एक तरीके से पहली चीज़ तो पार कर ही ली है, उसके बाद ही आप सोचो कि बाहर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना है. द सेकेंड थिंग इज़ दैट उसके बाद आप देखो कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो. राइट, द कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो द कोर्स का मतलब हो गया कि लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक ओके, सो लाइक आई एम फ्रॉम द कॉमर्स साइड एंड आई वॉन्ट टू डू माई ओन स्टार्टअप. सो आई वॉज लुकिंग फॉर द BBA. So I just googled it down, like what are the top universities. I just jotted down, and afterwards when मैंने कुछ universities जब shortlist कर ली, उसके बाद मैंने उसके courses देखे. Okay, so there is one more thing which I want to tell you guys, that the BBA in India is equal to BSc in UK. There is nothing like BBA in UK. Okay, yeah, so yeah. And that's why I'm doing BSc Honors Management, which is equivalent in India to BBA Honors Management. The second thing is course is very important. हाँ, तो उसके बाद कहते हैं हाँ, तो ओके गाइस, सो उसके बाद जब आपने कोर्सेज जब आप देखोगे तो कोर्सेज में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वहाँ के जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, जो कि हम अभी तक नहीं समझ पाए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव डन होल माई फर्स्ट ईयर द रिमोट स्टडी. आई हैवंट बीन टू माई यूनिवर्सिटी इन द फर्स्ट ईयर. आई वेंट देयर फॉर only for 16 days, that too 14 days in a room locked for quarantine, because I had to quarantine at that time. The COVID was there, and I get an opportunity only for 2 days to step out of my room and have a look on my university. So that's a different thing. So that's what I was trying to tell you, that that courses, that when you go to the particular website of any university, you'll see many courses right there. And so see the curriculum. So where was I? Okay, so I was there like कि जो वहाँ के जो सिस्टम्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं. जैसे कि हमारा 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड वहाँ का डिफरेंट होता है. लाइक A लेवल, GCSE लेवल, एंड A+ लेवल, A* लेवल, A1 लेवल. सो वहाँ का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप वो अकेले नहीं समझ पाओगे. अगर आप लाइक इफ़ यू आर लाइक न्यू स्टूडेंट, लाइक फॉर मी आई वॉज अ न्यू वन, बिकॉज आई हैव नो बैकग्राउंड फ्रॉम माई family who have been to abroad for study specially. तो अगर आप न्यू कमर, सो आई वुड सजेस्ट यू टू get a help from any consultant. Also I would suggest you to get a help from consultant, because आपको काफ़ी चीज़ें उसके बारे में नहीं पता होंगी. टर्म्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया. आप समझ ही नहीं पाओगे कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. ओके, सो द सेकेंड थिंग इज़ व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द कोर्स, प्लीज़ डू हैव अ लुक ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं. और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी वो अपने टर्म्स के हिसाब से लिखे होंगे, जो कि मे भी आप समझ पाओ, मे भी ना समझ पाओ. क्योंकि अगर जब आप उस चीज़ को गूगल भी करोगे तब भी वो बहुत क्या मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, बिकॉज मेरे लिए तो था भाई. इसलिए द सेकेंड थिंग कि मैं बोलूँगी कि आप आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन योर कोर्सेज, जब आपने एक बार थोड़ा डिसाइड किया अच्छा ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे इस कोर्स में जाना है, थोड़ा बहुत आपने जब नॉलेज गेन कर लिया, जस्ट डोंट गो bluntly to any consultant and sit like a dumb there, because there are many consultants out there who will make a fool of you, who will just grab the money out of you and give you nothing. Okay, so ऐसा भी मत करना. अपने तरफ से पहले रिसर्च करके जाना एंड तब वहाँ पे जाना. ओके, एंड देयर सेकेंड थिंग कि वहाँ पे जाने के बाद जो भी आप रिसर्च किया, जस्ट डोंट गो एंड स्टार्ट ओवर देयर, आई हैव लुक दैट, आई हैव लुक दैट. नो, जस्ट गो देयर एंड एनालाइज व्हाट इज ही सेइंग.
एंड आफ्टर दैट एनालाइज इट कि उसने क्या क्या बताया, आपके पास क्या क्या नॉलेज है, फिर आप अपनी बात रखो जो मैंने ये भी मुझे पता है। सीधा वहाँ पे जाके खुद स्टार्ट मत हो जाओ और खाली उसका ही मत लेते रहो। देयर इज़ अ सेकेंड थिंग, बिकॉज कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि वैसे तो मैंने तो जो लिया था वो था मेरा SIUK, द स्टडी इन यूनाइटेड किंगडम। तो वहाँ के जो कंसल्टेंट्स हैं, मेंटोर्स हैं, दे आर वेरी 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 हेल्पफुल एंड ऑल्सो दे डू नॉट चार्ज अ सिंगल penny from you. I'll come sometime later on this point. Okay, so where was I? I was on the course. Okay, so आपने एक बार अपने 12th के अगर मार्क्स अच्छे ले आए, then it's well and good. आपका लाइक एक स्टेप, आपका लाइक एक स्टेज पार हो गई है। उसके बाद आपने एक तरीके से अपना सारा रिसर्च एंड ऑल कर लिया, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, कौन कौन से कोर्सेज देखने हैं। ओके, रिसर्च पे आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप एम करो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना। ऑब्वियसली सबकी टॉप में ही जाना चाहिए, तो 1 to 100 ही टॉप होती हैं। फिर 100 to 200 जो होती हैं वो ऑन एन एवरेज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। हाँ चलो आप जा सकते हो, अगर आपको 1 से 100 के बीच में नहीं मिला, लेकिन अगर 200 से भी नीचे मिल रहा है तो सीरियसली में मत जाना, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा आप अपना UG यहीं से कर लो एंड फिर आफ्टर PG के लिए आप जाओ। ओके, द थर्ड थिंग, आप QS रैंकिंग से ही भाई सर्च करना, बिकॉज वही वैलिड रैंकिंग होती है। एंड उसके बाद आप जब एक बार आपने रैंकिंग देख ली, आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देख ली। ओके, सो देयर इज़ वन मोर थिंग, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं विच आर पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड फॉर सम कोर्सेज, लाइक देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ which are focused on some particular field, like the Queen's Mary University in London, जो कि लॉयर्स के लिए, आई मीन लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही है। सो लाइक मैंने भी उसमें अप्लाई किया था, मेरा ऑफर लेटर आ गया था, बट देन आई गॉट टू नो दैट it is more specified, it is more centralized for law students, so it's not good for me, although it has courses from me which I wanted to go in, but it's not good for me because वो law में specialization है उस यूनिवर्सिटी का। Similarly there are some universities जिनका specialization sports में होगा। So आप उस बात का भी ध्यान रखना कि कहीं में भी उन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे कोर्सेज होंगे, B.Ed मिल जाएगा, B.Ed मिल जाएगा, BSc मिल जाएगा, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बट दे वुड बी स्पेशलाइज इन सम अदर थिंग, लाइक इन सम अदर फील्ड। तो इट्स बेटर टू नॉट टू गो देयर, बिकॉज वहाँ पे आपका फोकस नहीं होगा। तो they are like London Business School, obviously you all must be, most of you must be knowing that London Business School is obviously for business. So it's better if you are planning to do any management course, and go for there. If you are planning for law, then like BLLB or LLB anything, then search for specialized university which are meant for that only. Like in India, if you want to do any management course, then obviously you will pursue for the IIM. That if you want to do engineering, then obviously pursue for IIT. Otherwise there are also some course like symbiosis and other things, वहाँ पे भी colleges हैं, वहाँ पे भी आप ले सकते हो, लेकिन specialization कोई चीज़ होती है। So this is one thing which you have to keep this in your mind while searching. So the ranking, specialization, course, also have a look on the faculty, वहाँ की faculty कैसी है। Also there is one more thing which is important, just not only see the heads of the curriculum or module, just have a look on the details of the curriculum, because वहाँ के subjects के भी names अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने भी Bristol University में I applied in the Bristol University and my courses names was only marketing. So if anyone would like, if anyone would ask me that what are you doing, so I would reply I'm doing marketing BSc Honors. But that doesn't mean that I'm only doing marketing, which means I'm studying management, I'm studying business studies, I'm studying marketing, I'm studying related all the subjects related to business, not only marketing. तो आप उसका मॉड्यूल का डिटेल भी देखना, क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स के नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बिहेवियर मॉड्यूल का नेम होगा, लेकिन उस मॉड्यूल के अंदर का जब आप डिटेल देखोगे तो इट माइट बी दैट यू विल फाइंड ओह इट्स वेरी रिलेटेबल टू क्वांट्स. So this happens, okay? So it depends on the different courses of different universities. So just don't skip by seeing the module head. Just go on the detail, read the line by line what exactly it is. So these are the things which you have to keep in mind while researching. And when you have gathered all the information, and if you are newer one, you don't have any knowledge about, like you have knowledge but still you think that you need any help,
or if you don't have any family background, which or you don't have any elder sibling who can help you out for this, then please go and take help from consultant. They are made for this. Okay, next. Okay, so next, when you'll head on to your consultant, आप उनको अपना सारा बताना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ देख रखी हैं. Then he'll tell you, okay, so if you want to apply in a UK university, there are two ways. The first one is you can, for example, if you have jotted down 5 universities, for example 5 or 6 universities, you can directly go to that particular university's website and directly apply through that. Okay, and the second method is that through apply from UCAS. So UCAS is meant for the applications of UK universities. So in UCAS you have to register yourself, and you will get that and you will get your UCAS ID there. And in UCAS you can fill the application of 5 universities, total 5. This is the limit. Below 5 is good, like below 5 you can, but not above 5. So 5 universities maximum you can fill at a time. So 5 universities आप और आपके कंसल्टेंट एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, आप उसके कोर्सेज देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, और फिर आप डायरेक्टली उसमें अप्लाई करेंगे. द फीस ऑफ UCAS is I think £25 if I do remember, because I paid 2500, around 2500 in Indian currency. So I think it was £25. Anyways, I'll just write in the description what's the exact fees, but as far as I know, it's only £25. Okay, so before applying, okay, so आपने research कर लिया, आपके marks अच्छे हैं, the work doesn't stop here. Now the main thing comes into the role. आप apply करोगे कैसे? So उसके लिए you should have 3 things. The first one is before application is your recommendation letter. तो आपको एप्लीकेशन से पहले रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा आपके स्कूल से. कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 मांगती है, कुछ 2 मांगती है, तो कुछ 3 मांगती हैं. जितना टॉप में जाओगे उतने, but like that mostly the top universities asks for 2 or 3 recommendation letters. Like mine asked for 3. So one is your class teacher ones, one is your any faculty one, and the third one is your principal ones. Well, to be honest, the principal ones is the main recommendation letter with the university. Have a look. The other ones are just for the formality. So yeah. So 3 recommendation letters आपको चाहिए होंगे. Then और उस पर भी साइन होने चाहिए आपके प्रिंसिपल एंड टीचर एंड ऑल के. Then the second thing is you should have good marks, obviously. Okay, so if you are aiming for top universities like 1 to 100, then if you have marks above 80%, then you have high chances. But if you are aiming like in 50s, like I applied to Bristol, its ranking is I think 45 or 50. I think 45 or 50 rank in the world. So yeah, so my eligibility criteria was I think above 90%. So yeah, so the more आप जितना higher aim करोगे उतना ही आपको higher marks चाहिए. But I think 80 or 85. Okay, so like 85 is a set bar. जितना का आपके 85 होंगे तो चल जाएगा काम, ठीक है. और अगर आपके co-curriculars होंगे तो वो तो सोने पे सुहागा टाइप्स हो जाएगा, you know. So but अगर नहीं भी है तो भी it's okay. आपके मार्क्स में चाहिए recommendation letters आपके पास है ही. The third and most important thing is your SOP. इसी के ऊपर आपकी main application टिकती है कि आप admitted होगे कि नहीं होगे. So SOP is statement of purpose, which is उसमें आप इस लाइक का इंटरव्यू नहीं. ओके, सो सम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपका इंटरव्यू लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं. तो it depends on different universities. Like mine one didn't take. They asked for SOP. So SOP is like kind of interview only. In fact, I would because in fact in my personal view, interview is much better than SOP, because in interview आपके पास chance होता है कि that you can mold the interview in your favor. You have a chance that interview has asked you any question, and if you don't know, then you can like flip it out or you know turn the table in your favor. But in SOP you don't have any chance like this. SOP में आपको लिखना होता है कि आपका मेन मोटिव क्या है, आप इस कोर्स में एडमिशन क्यों ले रहे हो.
जब आप मतलब जो भी बंदा पढ़ रहा होगा वहाँ पे, तो उसके क्वेश्चंस में वो जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे, तो द मेन थिंग आप इस कोर्स में एडमिशन लेना क्यों चाहते हो, why you want to take admission in this course. The second thing is why you want to take admission in this university, what's the main motive to be get involved in this particular course. These are the like 2-3 things. And what are the skills do you have. These are the things which you have to highlight in your SOP, or even these are the only things which you have to write in SOP anyways. These are the also these are the questions which interviewee ask in the interview, but in that you have a chance कि चलो ठीक है, नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट में थोड़ा अच्छा कर लेंगे, एटलीस्ट आपको इंटरव्यू का एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है. बट SOP में उस इंसान ने पढ़ा, उसको SOP आपका समझ आया, देन इज़ गुड. नहीं आया तो आप यू आर रिजेक्टेड. सो यू डोंट हैव एनी चांस. आपको अज्यूम करना पड़ता है कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा, तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ता है. सो SOP लिखने में भी कंसल्टेंट्स हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क विच यू कैन डू बाय योर ओन. यू नीड हेल्प from any guidance or from your parents, anyone who you feel who can help you out of this. Or even if you are good enough to write it down by your own, then it's very good. But okay, so SOP is a main thing जो कि like okay, so it's like 50-50%. 50% is your marks and 50% is your SOP. Okay, so like your marks is like eligibility criteria को वो क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं. अगर आपके मार्क्स ही नहीं क्रॉस कर रहे हैं तो बात ही ख़त्म हो जाती है. लेकिन अगर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल 70% और आपके मार्क्स 80% है, तो ऑब्वियसली आप क्रॉस द eligibility criteria and you have the advantage of extra 10%. Now the question comes to your SOP. So if they like your SOP, then it's good, but if not, then I'm sorry, you are rejected for that. So these are the things कि एडमिशन लाइक एप्लीकेशन से पहले आपके पास होनी चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स, रिसर्च एंड ऑल. फिर आप फाइनली आप उसमें अप्लाई करते हैं UCAS में. फिर फाइनली आप उसमें अपना एप्लीकेशन बनाते हो. ओके, सो बिफोर दिस आई ऑल्सो वांट टू मेंशन दैट इफ़ यू आर ऑप्टिंग द फर्स्ट ऑप्शन which you are thinking okay, so this happened with me also. like आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, या कंफ्यूज हो गया ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी. लाइक मुझे 7 यूनिवर्सिटीज़ पसंद आ रही हैं, लेकिन आप UCAS में से 5 ही भर सकते हो एट अ टाइम. ओके, नॉट एट अ टाइम, एक्चुअली ओनली वंस, बिकॉज यू कांट मेक different IDs of UCAS. You can only register once with the same ID, and you can't log in by different IDs. You can only have one, otherwise all your that would be blocked. Okay, so आप एक बार में 5 ही भर सकते हो. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 7 है, लाइक यू हैव 7 ऑप्शंस और आपको 7 यूनिवर्सिटीज़ पसंद आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में यू कैन गो एंड डायरेक्टली अप्लाई थ्रू दैट. बट प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि अपने कोर्सेज में जो कि उनका जो कोर्सेज होता है उसमें वो दिखाएंगे कि ओके, सो दिस इज़ द कोर्स, यू हैव सीन द कोर्स, यू हैव सीन द मॉड्यूल, एंड यू थिंक दैट ओके, सो दिस फिट्स फॉर मी, आई कैन अप्लाई डायरेक्टली थ्रू द वेबसाइट. But when you will go there through the application portal, you will see that okay, so this is not available. So when you go there, you will see the application portal, you see that there is no seat. Okay, so वहाँ पे उनके कोर्स के जो सीट्स हैं वो फुल हो गई हैं. बिकॉज दिस हैपेंड विद मी. लाइक आई डिडंट अप्लाई थ्रू डायरेक्टली वेबसाइट, आई अप्लाई थ्रू UCAS ओनली, बट आई वॉज रिसर्चिंग. ओके, सो माई कंसल्टेंट वॉज लाइक okay, so my consultant told me like I wanted to apply in the University of Leeds as well. So I was a little bit late for that, बिकॉज जब मैंने यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके देखा था तो वहाँ पे वो कोर्सेज की अवेलेबिलिटी दिखा रहा था कि ये कोर्स है और इसमें सीट्स अवेलेबल है. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड माय कंसल्टेंट एंड टोल्ड हिम दैट आई वांट टू बी लाइक आई वांट टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स. बट व्हेन ही चेक्ड इन द UCAS, क्योंकि UCAS जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता है यूनिवर्सिटी का. ऑलराइट, उनकी यूनिवर्सिटी कोर्सेज का है कि नहीं, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स होती हैं वो बहुत ही लेटली अपडेट होती हैं. इट हैपन्स वेरी ऑफनली कि
most of the times they are not updated because they update most probably in Jan and at the time of September. And in the time of September is an intake for new freshers. तो आप obviously September में नहीं apply करोगे. You will start applying from March if you want to be get admitted in a top university, and the major intakes are in September than January. So मार्च में वो अपनी वेबसाइट्स अपडेट नहीं करती है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. तो इट्स बेटर टू गो थ्रू यूकैस. वो आपको एग्जैक्ट चीज़ बताएगा कि अच्छा ये वाली पोजीशन, ये वाली सीट खाली है इस कोर्स में, इनफैक्ट दिस कोर्स इज़ अवेलेबल और नॉट. ओके, जो कि वेबसाइट्स में नहीं होती हैं. सो बट स्टिल इट्स योर कॉल इफ़ यू वांट टू अप्लाई थ्रू डायरेक्टली, बट प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने पहले देख लिया और फिर जब आप जाओ तो मिलेगी ना. ओके, so this so it's better to go through UCAS, but still it's your personal choice. But most of the students, like 90 or 80% students, apply through UCAS only. The second thing is that getting a help from a consultant is also हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर आउट कर देता है. आपका क्या बजट है, कैसे क्या होगा, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, वो भी वो आपको आराम से देख लेते हैं. क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो कहीं बाहर पढ़ने के लिए तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है कि आप कैसे फ़ीस वहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे. वो भी उसमें आपकी हेल्प आउट कर देते हैं. और आपको वीज़ा कब लेना है, कैसे लेना है, और वीज़ा भी पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके दिल्ली वीज़ा का जो ऑफिस है दिल्ली में, तब वहाँ पे जाके मिलेगा. तो उसके लिए भी जितना पेपर वर्क होता है. ऑल्सो लाइक आई टुक हेल्प फ्रॉम अ कंसल्टेंट एंड देयर वर लाइक लोड्स ऑफ थिंग्स लाइक कि जिसमें मुझे काफ़ी सारी हेल्प मिली थी जो कि हम अकेले नहीं कर पाते. टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे आपको क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन अगर आपने चूज़ किया है तो आपको वो बाद में they'll allot you afterwards, like near September they'll allot you your room, your accommodation, wherever you are staying. So but before that you have to apply for visa and you don't have any proper address. So there also the role of consultant comes there because they have a whole team which helps you out in filling each and every paperwork. So वो थोड़ा messed up होता है. But still it's your call. अगर आप अकेले चाहो and तो कर सकते हो. But mostly people do take help from consultant. Also I would suggest you that आप SIUK में जाना. I'm not telling you because I have been there. I'm telling you because वो really में काफ़ी helpful है. वो आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करता है because I think they directly get commission from the university. So that's why they don't charge a single penny from any student. But there are some consultants जो ही charge करते हैं because before SIUK I went to another consultant. I would not name them, so they charged like a very high price and I was new, I didn't have any idea about this, so that's why I got trapped in that. And after that I get to know that okay, so these are the things. So that's why I just want to alert you guys and please don't get trapped in all these things. वही कंसल्टेंट देखना जो कि फ्री होता है बिकॉज इसमें एक भी रुपए नहीं लगता है उनको. they should not charge a single penny from you because they directly get commission from the university. जो कि आपसे चार्ज कर रहे हैं ना कर रहे हो, सबको कमीशन मिलता है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कि वो स्टूडेंट्स को भेज जाए उस यूनिवर्सिटी में. सो उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग बेनिफिट होता है कि उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटी से. So for example if you want to get admitted in a top university, so उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा वहाँ का जो रीजनल मैनेजर होगा, तो वो थोड़ा इंटरनल मैटर्स में रियली में हेल्प करता है कि किसके थ्रू आया है आपकी एप्लीकेशन. ओके, सो दिस इज़ अ क्रूशल थिंग जो कि काफ़ी बच्चों को काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के पास एप्लीकेशंस आती हैं वहाँ पे डिफरेंट कोटाज होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट कोटा, नॉर्मल कोटा. तो हम लोग का तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट में जाएगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं. वो लोग देखते हैं कि अच्छा ये एप्लीकेशन किसके थ्रू आई है, डायरेक्ट स्टूडेंट के थ्रू आई है अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाके कर रहे हो, या यूकैस के थ्रू आई है, या फिर किसी एजेंट के थ्रू आई है. एजेंट का मतलब हो गया कंसल्टेंट, क्योंकि उसमें जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें ऑप्शन होता है कि आपने किसके थ्रू भरा है, ओन
ओन भरा है, एजेंट के थ्रू भरा है या डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भरा है। तो वो जो एजेंट के थ्रू होता है, जो भी होता है, अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू भरे तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन भी लिखोगे तो वो उनके पास जाता है एंड दे हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू देम, सो दिस हेल्प्स यू आउट विद योर एप्लीकेशन। और इससे काफ़ी सारा मतलब हेल्प होता है कि कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं, माइट बी दे आर नॉट, आई वुड नॉट से दैट डायरेक्टली, वाई नॉट डायरेक्टली, आई वुड से डायरेक्टली दैट कुछ बच्चों का जो कि जेन्युइन नहीं डिजर्विंग होते हैं जाना, बट उन्होंने उस कंसल्टेंट के थ्रू करवाया होता है, तो दिस हेल्प्स देम अ लॉट विद देयर एप्लीकेशन एंड they get selected in that university. So this is also a very very main reason कि आप सही कंसल्टेंट को चुने और कंसल्टेंट को ज़रूर चुने. So yeah, this is the thing. And when you okay, so जब आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया तो ऐसा होगा कि मान लो आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया. सो व्हाट हैपेंड विद मी, लाइक क्वींस मैरी से मेरा ऑफर लेटर आ गया था पहले एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से बाद में आया था. तो इट हैपन्स लाइक कि अगर आपको तो इट हैपन्स लाइक क्वींस मैरी से आपके पास ऑफर लेटर आया और आपको उसमें नहीं जाना है, सो यू जस्ट रिजेक्ट दैम. बाकी के 4 जो होंगे वो आपके एज इट इज़ एज बने रहेंगे. बट अगर आपका क्वींस मैरी में आपने हाँ भर दिया तो जो बाकी के 4 होंगे भले ही उनका आपके पास ऑफ़र आया हो नहीं आया हो, मतलब अभी प्रोसेस में हो, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट आउट हो जाएंगे. So I would suggest you also guys that if you are applying through UCAS, then please do wait for the other universities to get in touch with you. Like उसमें update आ जाता है अपने आप ही किस you have got a offer letter or a partial offer letter or you are rejected. So do wait, do not just hassle around कि अच्छा मेरे को मिल गई, मे बी जो अदर यूनिवर्सिटी हो वो उससे भी आ जाए. सो इसमें थोड़ा पेशेंस रखिएगा. एंड द फर्दर थिंग्स लाइक द फी ट्रांसफ़र, द वीज़ा एंड ऑल थिंग, वो सब तो पेपर वर्क होता है, तो वो आपको कंसल्टेंट अपने आप समझा देगा. बट लाइक मेरा समझाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज वो सारा पेपर वर्क होता है. ऑलराइट, तो आई थिंक फॉर दैट आई विल मेक एन अनदर वीडियो फॉर द फर्दर. लाइक अभी आपका सारा काम हो गया, आपके क्लास 12 के मार्क्स अच्छे आ गए हैं, आपने सारा रिसर्च कर लिया है, आपने कोर्स वगैरह सब देख लिया है, फिर आपने कंसल्ट के पास चले गए एंड फाइनली यू आर डन विद योर एप्लीकेशन. And there is one more thing that I would also suggest you guys that if you are pursuing UG and you are from India, then please then you can go like for the education. For the education, the UK is best, then US is best, then Canada is best. These 3 countries are best for education. And if you are pursuing UG, then go for UK. You can obviously go for UK, and after UK, for my personal point of view, then Canada. Not US for UG because because there are certain things in US which is difficult for the students who are pursuing UG because the education system of India and US is very 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 different. All the rules are very different. The UK education system and an Indian education system is very similar because, as you know, in the history UK have been ruled on our country, so that's why उन्हीं का education सिस्टम ही हमारे इंडिया में अभी भी चल रहा है. तो उस वजह से दिस इज़ अ लॉजिकल रीज़न कि यूके और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम होगा, जब आप उसमें पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में आएगा इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी वेरी सिमिलर. बट जो यूएस का एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया वंस. एंड देयर इज़ सेकेंड थिंग कि यूएस का जो वीज़ा मिलना होता है ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं. इनफैक्ट नॉट देखे, आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माई आईज दैट देयर वाज अ वन स्टूडेंट जिसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, उसका को करिकुलर बहुत अच्छे था, एवरीथिंग वॉज फाइन. इनफैक्ट ही हैज़ गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ US, बट ही डिडंट क्वालिफाई द इंटरव्यू ऑफ US वीज़ा. Okay, there is no interview for UK visa. Let me clear this out. There is no interview for UK visa, but there is for US visa. For some it is, for some it is not. But for UK के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है. US के लिए I'm not very sure, but there are some
बट आई थिंक कुछ के लिए होता है यूएस में, अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो उसको जो है यूएस इंटरव्यू, जो यूएस वीज़ा का जो इंटरव्यू था, ही कुडंट क्रैक दैट, सो और उसके पास यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन था भी, तो वो नहीं जा पाया। एनीवेज इट्स योर पर्सनल कॉल, बट फ्रॉम माई ओपिनियन एंड फ्रॉम द लॉजिकल सेंस, लाइक यूएस के लिए, सॉरी यूजी के लिए यूएस जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उसका सारा एजुकेशन सिस्टम वगैरह डिफरेंट है, इनके से काफ़ी दूर भी है। एनीवेज फ्रॉम इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम यूके, एंड वहाँ पे सेटल डाउन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। यूके में उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, यू विल फाइंड मैनी इंडियंस देयर, ओके। सो दिस अ थिंग, but if you are going for PG, like if you want to pursue PG, then please go ahead, then it's good because you have got an experience. But for UG, I think US is not good. US is not a good option, even though I'm not the only one. If you'll go to any consultant out there, he'll also like be more bent towards UK or Canada, not very bent towards US, to be honest, because there are some reasons which I have, and of them which I have already discussed with you. Hey guys, so this is it from my side for this video, and जो बाकी चीज़ें होती हैं like visa, fee payment, visa के साथ documents, passport and all those things, I think if you have like any doubt on that, if you want to know about those things, all the paperwork and procedure, then please drop a comment in the comment box and I'll get to know that what else you want to know. Also guys, please ignore my look because right now I'm very tired. Road गाना गाना बंद होता रहता है. This is a night time and I'm shooting this video right now, and after this, as you can see, my blanket's all set and I just have to be there on the bed and just go to sleep. And lastly guys, stay tuned on 18th of September because I'll be traveling to UK on 18th of September. I'll be shooting all the vlogs, but sorry guys, I'll be shooting on 18, but obviously I'll be shooting and I will not be able to post on 18. Stay tuned for I think 20, yeah, stay tuned for 20. I'll try my best to edit the video as soon as possible because there I have to quarantine for 5 days, and but yeah, I'll try my best and I'll try to upload the video on 20th of September, so stay tuned for 20th of September, and I'll see you